हेलो एवरीवन। सो ये डाइग्राम जो है वो क्रेनियल फोसा का डाइग्राम है। सो आज हम क्रेनियल फोसा पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द डाइग्राम ऑफ क्रेनियल फोसा एंड फर्दर द क्रेनियल फोसा इज डिवाइडेड इनटू थ्री फोसाज. So first is anterior cranial fossa, second is middle cranial fossa, and third one is the posterior cranial fossa. So anterior cranial fossa is bounded by anterior and laterally by the frontal bone and posteriorly by the lesser wing of sphenoid, then anterior clinoid process, then sulcus chiasmaticus, and this one is the again lesser wing of the sphenoid. In the boundary of the middle cranial fossa, so the boundary of the middle cranial fossa, anteriorly it is bounded as same as the posterior border of the anterior cranial fossa. So again the anterior boundary of the middle cranial fossa is bounded by lesser wing of sphenoid, anterior clinoid process, then sulcus chiasmaticus, and again lesser wing of the sphenoid and clinoid process. And posteriorly it is bounded by the petrous part of the temporal bone. This is the superior border of the petrous part of the temporal bone, and this is the posterior clinoid process and dorsum sella, and again the superior border of the petrous temporal bone of the another side, and the rest is a posterior cranial fossa. एंटीरियर क्रेनियल फोसा के जो फीचर्स हैं वो इसमें नज़र आ रहे हैं. सो दिस इज़ द फ्रंटल क्रेस्ट एंड दिस इज़ द फ्रंटल साइनसिस प्रेजेंट इन द फ्रंटल बोन एंटीरियरली, एंड दिस इज़ द क्रिस्टा गैली. In crista galli and frontal crest there is a foramen present which is known as foramen cecum, and there are cribriform plates of ethmoid bone also present. Okay, and टू ऑर्बिटल प्लेट्स होते हैं फ्रंटल बोन के प्रेजेंट. ठीक है, उसके जस्ट पीछे एक स्मूथ एरिया होता है जिसको बोलते हैं जुगम स्फेनॉइडल, एंड दिस इज द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड. दिस इज द लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन. दोनों तरफ पोस्टीरियर बाउंड्री बना रहा है हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा का, एंड बिटवीन दीज टू द स्मूथ पार्ट विच इज नोन एज जुगम स्फेनॉइडल, and these two process is called clinoid process. So and as it is present anteriorly, so this is known as anterior clinoid process. तो अपने स्पेसिमेन में देखेंगे स्कल पे, जिसमें आपका स्कल वॉल्ट को रिमूव किया गया है, तो आप फीचर्स देख सकते हैं. सो इसमें आपको एंटीरियर क्रेनियल फोसा, सो हेयर टू हेयर द एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस इज मिडिल क्रेनियल फोसा एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा. सो अगर फीचर्स की बात करेंगे एंटीरियर क्रेनियल फोसा में हम स्कल पे, तो ये आपका फ्रंटल साइनस हो गया. दिस इज द फ्रंटल क्रेस्ट, इन बिटवीन फ्रंटल क्रेस्ट एंड दिस इज द क्रिस्टा गैली द फोरामेन सिकम इज सीन. देन दीज टू आर द cribriform plate. In cribriform plate of ethmoid bone, the two foramen is also present, anterior ethmoidal foramen and posterior ethmoidal foramen. Now this is the lesser wing of the sphenoid, this is jugum sphenoidal, this is anterior clinoid process, this is sulcus chiasmaticus, and this is again lesser wing of the sphenoid. So this is all about the anterior cranial fossa. Thank you.